सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम तृतीय अभ्यास ष्ट क्रमांक 7 पेज नंबर 7। कल हम देख रहे थे, हाँ, yesterday we saw उदाहरण वाक्य अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। Then we also saw aham vidyam pathami. We will just see again just for practice. सूर्य प्रकाश जी अहम विद्याम पठामी हिंदी में कैसे होगा? मैं विद्या पढ़ता हूँ। करेक्ट, सम्यक। रवि जी नेक्स्ट। आवाम क्रीडाम पश्यावः। अच्छा, आप कल नहीं आए। अहम, आवाम, वयम। तो आवाम इस हम दोनों, वयम हम सब। पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। पश्यामि मैं देखता हूँ, पश्यावः हम दोनों देख रहे हैं, पश्यामः हम सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे आवाम क्रीडाम हम दोनों खेल देख रहे हैं, पश्यावः। हाँ, हरि जी वयम पाठशालां गच्छामः। वयम पाठशालां गच्छामः। हाँ, इंग्लिश और हिंदी इज ओके। We plural, not? Yeah, we all. Yeah, हाँ. we all. So we all हाँ. are going to the school. Correct. Sundar ji, we are just seeing whatever we saw yesterday. Page number 7. उदाहरण वाक्य number 7. अहम अत्र आगच्छामि in Hindi or in English? English. तो मैं इधर आ गया हूँ। आ रहा हूँ। करेक्ट। आ रहा हूँ। हाँ, मैं इधर आ रहा हूँ। सूर्य प्रकाश जी वयम अत्र तिष्ठामः। हम सब यहाँ बैठ रहे हैं। करेक्ट, सम्यक। रवि जी अहम जलम पिबामि। मैं जल पी रहा हूँ। करेक्ट। हरि जी अहम पुष्पम हाँ. जिघ्रामि। हाँ. Aham is myself, pushpam is one pushpam, jighram is smelling. So I am smelling the flower. करेक्ट। सुंदर जी वयम अत्र सीदामः। सीदामः। So हम सब इधर बैठ रहे हैं। करेक्ट, सम्यक। बालिका कुतः आगच्छति? सूर्य प्रकाश जी बालिका कुतः आगच्छति? बालिका कहाँ आ रही है? कहाँ से? कुतः कहाँ से आ रही है? हाँ, आ रही है। सम्यक। ओके, नाउ सेम संस्कृत बनाओ हिंदी से। I have one question. I will try this. हाँ, ओके ओके। संस्कृत बनाओ या हिंदी से संस्कृत? Which do you want to try? Like the same one which you did now. Like Sanskrit, I will tell in Hindi or. Okay. Okay, you try aham vidyam pathami, fourth one, in Hindi or English? I am studying. I am studying. I'm studying a book or Correct. I'm studying. Good. Vidyam is object, so I'm studying something. I'm studying knowledge, something. And you try one more. Avam kridam pashyavaha. I am playing. I
वयं क्रीडं पश्य Pashyavaha. See, aham was I. Here it is avam. Yesterday we saw aham, I am avam, playing. avam. Avam is dvitiya vibhakti. Avam means we both. Dvivachana. We both, correct. Two We people. both are playing, yeah. We both are watching the game. Pashyavaha. Okay. Pashyava. Drish dhatu is to watch. So we are seeing the krida. Good. Okay. Samyak. Now the next one you also want to try from Hindi to Sanskrit? Yeah. Okay. Bit I'll try. हाँ, okay. We'll go in this order. रवि जी, मैं पढ़ता हूँ संस्कृत. अहम पठामि. हरि जी. मैं पाठशाला जाता हूँ. पाठशाला गच्छाम्यहम्. सम्यक. That's what I want to ask, because that aham is not necessary there. Yes. Sorry, you had a question, Yeah, right? the question was basically, particularly in the case of Sanskrit, since aham is understood in all the cases where the verb is first case, you can just say that, no? For example, vidyam padami means it cannot be anybody other than me. Yes. So we can actually say Correct. padamyaha also just. Yes, absolutely correct. Actually, we discussed the same thing in maybe a week ago because Sundarji also had a similar question. Everyone heard that question? Okay, so the question was in aham vidyam pathami. Is it not enough to say vidyam pathami because pathami is anyway for uttama purusha ekavachana, right? Correct. Because when we read Bhashya Tika in many of the Vedantic texts, aham, tvam and all, many times it will not be there because Bhashyakara writes like that. Correct. We don't need it, but now for this book, while we are studying this way, it is better to have aham. मैं vayam. पाठशाला जाता हूँ. Actually, you can convert it to पाठशाला गच्छाम्यहम्. Gachami itself is enough. Actually, Gachamyaham is yeah, better. yeah. Or aham padashalam gachami. Correct. Who was next? Sundar ji. मैं खेल देखता हूँ. You are on mute. You are on mute. अहम क्रीडाम पश्यामि. Correct. सम्यक. संध्या जी. मैं फूल सूंघता हूँ. अहम that word फूल. फूल फूल is flower. पुष्प पुष्पम. पुष्पम जिग्रा. Correct. जिग्रामि. अहम पुष्पम जिग्रानि. जिग्रामि. सम्यक. जिग्रामि. सूर्य प्रकाश जी, मैं वहां से आता हूँ. अहम ततः हाँ, गच्छामि. सम्यक, बहुत सम्यक. रवि जी. अहम अत्र तिष्ठामि. सम्यक. नेक्स्ट हरि जी. अहम लता पश्यामि. लताम. लतां पश्यामि. सम्यक. सुंदर जी. मैं अहम जलम पिबामि. सम्यक. संध्या जी. सॉरी. 9th one. मैं सत्य बोलता हूँ संस्कृत में. अहम सॉरी सत्य. सत्यम वदामि. सत्यम वदामि. वदामि. No problem. Next time will be much easier. Little practice required. That's all. Aham satyam vadami. Okay. Next, now little more complicated. सूर्य प्रकाश जी, हम दोनों कहाँ से आते हैं? अवाम कुतः अगच्छामि. गच्छामि गच्छावः. अगच्छावः. सम्यक, बहुत सम्यक. आवाम ततः आगच्छावः. हरि जी. आवाम जलम पिबामि. पिबावः. करेक्ट. पिबावः. सुंदर जी. आवाम नृपुम पश्यावः. नृपम. नृपम पश्यावः. वेरी नाइस. ओके. संध्या जी, हम सब विद्या पढ़ते हैं.
Aham, not aham, vayam patami, vidya patami, विद्याम नॉट पठामि vidyam patami. पठा पठामः पठामि पठावः पठामः तो वयं विद्यां पठामः सूर्यप्रकाश जी वयम् ईश्वरं नमामः। वंडरफुल सम्यक रवि जी वयं पुष्पं जिघ्रामः। हरि जी Vayam balika is singular. One balika. बालिका विच विभक्ति Second. हाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन वुड बी करेक्ट बालिकां Rashama. वंडरफुल करेक्ट वयं बालिकां रक्षामः ओके देन अशुद्ध वाक्य अहम पुष्पम घ्रामि हियर दे हैव रिटन अहम पुष्पम जिघ्रामि दैट इज द शुद्ध वाक्य एंड वन मोर शुद्ध नेक्स्ट आल्सो अहम अत्र स्थामि शुद्ध वाक्य इज अहम अत्र तिष्ठामि सो सुंदर जी भवानेव वदतु वयं बालिका रक्षामि अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य अस्ति वयं बालिकां रक्षामः अथवा किम् अस्ति अथवा अहम बालिकां रक्षामि। सम्यक समीचीनम् अस्ति शुद्ध करो तथा नियम बताओ नियम नहीं बताना है शुद्ध करना है अहम दृश्यामि संध्या जी व्हाट इज द मिस्टेक हाउ डू यू मेक इट करेक्ट अहम दृश्यामि Sorry, Akash. I नो didn't- प्रॉब्लम अहम पश्यामि दृश्य धातु विल बी पश्यामि ओके अहम पश्यामि इट्स ओके ऑन थर्सडे फ्राइडे विल बी बेटर रवि जी सूर्य प्रकाश जी अहम स्थामि अहम स्थामि इज करेक्ट ना। स्था धातु विल बी व्हाट इन लट लकार स्था विल बी तिष्ठामि। सम्यक बहुत समीचीनमस्ति रवि जी अहं पिबामि। पिबामि हाँ हरि जी Which one is which? Where are we? फोर्थ वन शुद्ध वाक्य शुद्ध करो तथा नियम बताओ Avam gets that one. No? हाँ? अहं घ्रामि। ये वाला। ये। हाँ Aham jigrami. सम्यक सुंदर जी वयं सदामः So vayam tishtamah, but it can also be vayam sadamah. Can't सीदामः No. Yeah. Huh? वयं सीदामः Sidamah. Sidamah. संध्या जी आवाम गच्छतः Sidamah. Aham gacchami. हाँ अहम आवाम अहम गच्छामि इज करेक्ट आवाम किं भविष्यति Avam gacchaha. गच्छावः करेक्ट समीचीनम् सूर्य प्रकाश जी आवाम गच्छतः अथवा अच्छा ये भी है सूर्य प्रकाश जी भवानेव वदतु आवाम गच्छतः अहम हाँ अहम गच्छामि। गच्छामि ओके गच्छतः वुड बी व्हाट गच्छतः मैं गच्छामः गच्छामः प्रथम पुरुष अहम गच्छतः न सह गच्छतः सः गच्छति किं गच्छति हाँ कः गच्छति सह गच्छति तौ करेक्ट तौ समीचीनं गच्छतः तौ गच्छतः हाँ भवानेव वदतु वयं पश्यन्ति सूर्यप्रकाश जी भवानेव वयं पश्यन्ति पश्यन्ति पश्यति पश्यतः वयं पश्यतः वयं पश्यतः पश्यतः पश्यत् उत्तम पुरुष पश्यामि पश्यामः हाँ वयं पश्यामः वयं पश्यामः समीचीनम् अथवा पश्यन्ति के पश्यन्ति पश्यन्ति तौ पश्यन्ति
ते Te. Yes. ते पश्यन्ति समीचीनं ते पश्यन्ति ओके अभ्यास 5th पॉइंट अभ्यास दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो दो क के वाक्यों मैं पढ़ता हूँ रवि जी मैं पढ़ता हूँ द्विवचन बहुवचन हाँ एक वचन द्विवचन हाँ द्विवचन वुड बी हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावः हाँ और बहुवचन वयं पठामः समीचीनं हाँ मैं पाठशाला जाता हूँ भवानी में रवि जी we are looking at fifth अभ्यास we are doing it says क दो क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो राइट एंड क के वाक्यों we are taking from number 2 संस्कृत बनाओ ऊपर हाँ संस्कृत बनाओ से मैं पढ़ता हूँ he did now हाँ रवि जी भवानी वदतु मैं पाठशाला जाता हूँ द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में पाठशाला पाठशाला हाँ गच्छति द्वितीया विभक्ति गच्छतः पाठशाला वयं पाठशाला द्वितीया विभक्ति पाठशाला प्रथमा विभक्ति है ना द्वितीया विभक्ति में पाठशालाम अहम पाठशालाम गच्छति गच्छामि गच्छामि हाँ और द्विवचन बहुवचन में अहम पाठ हाँ आवाम हाँ पाठशालां गच्छावः समीचीनं बहुवचन वयं हाँ पाठशालां गच्छामः सम्यक हरि जी मैं खेल देखता हूँ द्विवचन में एकवचने किमस्ति मैं खेल देखता हूँ एकवचने अहम हाँ खेल पश्यति खेल पश्यामि सॉरी हाँ खेल पश्य is, हाँ खेल क्रीड हाँ क्रीडा क्रीडा, क्रीडां क्रीडा अहं स्त्रीलिंग शब्द पश्यामि पश्यामि समीचीनं द्विवचने अहम् आवां हाँ क्रीडां पश्यावः बहुवचने वयं क्रीडां पश्यामः सेम थिंग फॉर नंबर 4 मैं फूल सूंघता हूँ अहं फूल जिघ्रामः फूल इज पुष्प हाँ अहं पुष्पं पम- जिघ्रामः जिग्रामी जिघ्रामि सॉरी जिघ्रामि वयं पुष्पं जिघ्रावः no एकवचन द्विवचन द्विवचन इज अहम् आवाम् आवाम् पुष्पं जिघ्रामः वाह जिघ्रावः हाँ आवां पुष्पं जिघ्रामः आवां पुष्पं जिग्रावः जिघ्रावः बहुवचने जिघ्रामः वयं 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 पुष्पं वयं पुष्पं जिघ्रामः जिघ्रामः वयं जिघ्रामः सुंदर जी भवान वदतु मैं वहां से आता हूँ द्विवचन और बहुवचन में मैं वहां से आता हूँ अहम sorry today and my mind is a bit all over here. It's There are okay. all kinds of- If you like to continue tomorrow, it's fine. That is on Thursday, Friday, because you just came from appointment, no? Yeah, no, and yeah, there's Okay, no worries. Sandhya ji, would you like to try? मैं which one? मैं वहाँ से आता हूँ. Aham. Atah. ततः. Atah. अतः is यहाँ से. वहाँ से would be Ita. Ita. ततः. Sorry. ततः. Tata. Sorry. हाँ. Okay. Aham tata. Ata. ततः आता हूँ. आगच्छामि. अहं ततः आगच्छामि. Aham इति- tata agacchami. हाँ, Okay. इति एकवचने अस्ति. द्विवचने Vayam. हाँ द्विवचने आवाम Which? Avam. हाँ
अहम आवाम ततः ततः हाँ। गच्छामि आगच्छा आगच्छावः अहम ततः गच्छामि आगच्छामि आवाम ततः आगच्छावः। और बहुवचन में बहुवचने वयम वयम ततः दिस वर्ड आगच्छामः। गुड, हाँ, गुड प्रोग्रेस। हाँ, सूर्य प्रकाश जी, मैं यहाँ बैठता हूँ। अहम अत्र तिष्ठामि। द्विवचने आवाम अत्र तिष्ठावः। बहुवचने वयम अत्र तिष्ठामः। समीचीनम्। भवानेव वदतु, मैं लता देखता हूँ। सूर्य प्रकाश जी, भवानेव। अहम हाँ। लताम अहम लताम पश्यामि। द्विवचने आवाम लताम पश्यावः। बहुवचने वयम लताम पश्यामः। करेक्ट। रवि जी, मैं जल पीता हूँ। अहम जलम पिबामि। आवाम जलम पीबावः। वयम जलम पीबामः। आप भवाने वदतु, मैं सत्य बोलता हूँ। अहम सत्यम ब्रूयामि। वद धातु। वदामि। वदामि। द्विवचने आवाम सत्यम वदावः। बहुवचने वयम सत्यम हाँ। वदामः। सम्यक्, समीचीनमस्ति। खास क्या? हाँ हाँ, इधर यहाँ से। नहीं, बस खास से नहीं। अच्छा, ठीक। अगरबत्ती का प्रॉब्लम है क्या? अगरबत्ती को Cold is going on, flu is going kind of thing. इट्स ओके। हाँ, हरी जी, भवाने वदतु, हम दोनों कहाँ से आते हैं? सॉरी, दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज ओवर फॉर नाउ। इनके लट, नाउ वी आर गोइंग बैक टू फिफ्थ अभ्यास है ख, दीर्घ। इनके लट उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष के रूप लिखो। भू धातु लट उत्तम पुरुष किम भविष्यति? भू धातु प्रथम पुरुष भी भवति भवतः भवन्ति। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष भी भवसि भवतः भवतः। उत्तम पुरुष भवामि। हाँ, भवामि भामावा भवा भवामः भवावः। हाँ, भवामि भवावः भवामः। पठ धातु पठति उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। हाँ, पठामि हाँ। पठावः पठामः। समीचीनमस्ति। सूर्य प्रकाश जी, रक्ष धातु उत्तम पुरुष। रक्षामि रक्षावः रक्षामः। सम्यक। वद धातु वदामि वदावः वदामः। एवरीथिंग एल्स इज सिमिलर। गम इज गच्छामि गच्छावः गच्छामः। आगम आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। दृश पश्यामि पश्यावः पश्यामः। स्था तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। पा पिबामि पिबावः पिबामः। घ्रा जिघ्रामि जिघ्रावः जिघ्रामः। सद सीदामि सीदावः सीदामः। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ग। इनके प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो। इनके रमा, हरि जी, रमा प्रथमा और द्वितीया। रमा शब्द। रमा रमा
Ramaha. रमा रमे रमाः Rama Rame Ramaha. द्वितीया Tritiya is Ramam. Rama Rame Ramaha. समीचीनं सूर्य प्रकाश जी बालिका प्रथमा और द्वितीया बालिका बालिके बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः समीचीनं भवानेव वदतु लता लता प्रथमा और द्वितीया मैसेल्फ भवानेव यू ओनली आप ही भवानेव लता लते लताः हाँ लतां लते लताः समीचीनमस्ति रवि जी विद्या प्रथमा और द्वितीया विद्या विद्ये विद्याः हाँ विद्यां विद्यां विद्ये हाँ विद्याः सही ये ऑन करो चलिए ऑन करो आपके लिए करो। नहीं नहीं आपके लिए ना ठीक है। कथा कथा प्रथमा और द्वितीया किसका? कथा कथा हाँ कथा कथे कथाः हाँ द्वितीया कथां कथे कथाः समीचीनं बहुत समीचीनम् अस्ति बहु समीचीनं रिक्त स्थानों को भरो लट लकार अहम जलम किम अस्ति सुंदर जी यू आर ओके टू रिटर्न I'm here and there. Okay, so okay, which one? We are in sixth one last one on page 7 lat lakar aham jalam kim aham jalam pibami. sahi samichinam sandhya ji aham griham griham the sixth we are looking at number 6 the last abhyasa on page number 7 second point aham griham gam dhatu would be I have to scroll. aham gacchami है ना aham griham gacchami correct Okay. है ना am I correct 7. sixth page 7 हाँ. last abhyas हाँ second point aham griham you found it No. okay It's अभ्यासा रिक्त स्थान को भरो. Okay. correct अहम गृहम. hmm. Okay. well, how will you finish So that sentence हाँ aham griham I don't know the meaning of gruham actually. house I am Okay. dash to the Aham house gruham. हाँ see they have written in brackets gam dhatu uttama purusha ekavachana would be gaccha Gachami. samichinam very nice Okay. हाँ Aham gruham gachami. गच्छामि सूर्य प्रकाश जी अहम लताम अहं लतां दृश्यामि पश्यामि पश्यामि these are all trick questions रावी जी हाँ पुष्पम हाँ ग्रामी जिग्रामी हाँ हरि जी वयम सत्यम Vayam Satyam Vadamaha. वदा Vadavaha. महा Vadamaha. वदामः Mayam. वयम सत्यम वदामः सूर्य प्रकाश जी आवाम अत्र आवाम अत्र तिष्ठामः तिष्ठा वह मः वह द्विवचन आवाम इस द्विवचन हम दोनों हाँ तिष्ठावः तिष्ठावः भवानेव वदतु सूर्यप्रकाश जी वयं पुस्तकं वयं पुस्तकं पठामः समीचीनमस्ति रवि जी ते भोजनं ते भोजनम पचामः प्रथम पुरुष ते पचामि वो सब ते मतलब वो सब प्रथम पुरुष बहुवचन पचति पचन्ति पचन्ति ते भोजनं पचन्ति पचन्ति so we have finished abhyasa of third abhyasa is finished with this. In the first abhyasa we saw mainly pullinga shabda and
Pullinga Shabda, Prathama Purusha and Bhu Dhatu. In the second Abhyasa, we saw Napumsakalinga Shabda, Madhyama Purusha, Bhu Dhatu. Now we have seen Strilinga Shabda and Uttama Purusha with Bhu Dhatu. These, what we have seen in these three will come in fourth, fifth, sixth. Some specific things will come in repeat. We will see Abhyasa 4 on Thursday. Any questions? Okay. It is difficult in the beginning. It gets easy every single day. We have seen, everyone remembers the Raviji, Surya Prakash ji, Sundar ji from, we have finished 5. In 5, we have seen how much progress we have all made. Every day it gets better and better. So no need to worry about anything. Okay. Sandhya ji, you have a question. I have one query. Like we have to understand that singular, plural, and then that V1, V2 kind of, right? Yes. That last around 60, page number 60, we have this Correct. words. So from page number 60 to 80, there are sanya, nouns, right? 60 to 80 have nouns. So Rama Shabda, Rama Shabda, Pustakam, Griham, all that Shabdas are there from page 60 to 80. Then page 81 and 82 have numbers. We will see that later. From page 83, there are verbs. So Bhu Dhatu is to be somewhere. He is there. That is Bhu Dhatu. Or it is there. And then other dhatus, we saw Has Dhatu, Gach Gam Dhatu, Agam Dhatu, all these things. Each will have Prathama Purusha meaning that person. He, she, it, some other person. Madhyama Purusha meaning you. And Uttama Purusha meaning I. Okay. Yeah. And you see the Dhatu Rupa, you will understand yourself. And okay. And like the main words which we need to understand are in the around page 7, like they're above. yes, Fourth, so, fifth. yes. Okay. Each Abhyasa will list a set of Shabdas. That Shabda will have Shabda Rupa behind in the book. So if page number 7 has, page 6 has Gam Dhatu. Gam Dhatu you will find in page number 85 or 87 or wherever it comes. Okay. Okay. And you have to match. Aham griham gacchami. Vayam griham gacchamaha. Match with the whatever is given later in the book. Okay. Okay. Better than yesterday. Yes. Yesterday was blank, so Yes. today is better. Yes. 1%. Thursday will be even better. Okay. Okay. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamacachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kratau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Devhaya Dakshina Murtaye Namah. Om Shanti Shanti Shanti. Om.